ठीक है, कैमरा दिख रहा है आपको? Yes. उससे डर लग रहा है या इन लोगों से डर लग रहा है, या किसी से नहीं डर लग रहा? मुझसे डर लग रहा है। ओके, हाँ, मैं सांप बिच्छू नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, किससे डर लग रहा है? इन लोगों से डर लग रहा है या उससे डर लग रहा है? सर इंग्लिश बोलने से इंग्लिश बोलने से डर लग रहा है, ठीक है। क्यों? सर बोल नहीं पाते इंग्लिश ना। क्या है, एक चीज बताइएगा, क्या है ये? व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? टेल मी। सर इंग्लिश लैंग्वेज है। इट इज अ इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज। क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज है कि नहीं है? डू यू नो हिंदी? यस सर। हिंदी बोलने से डर लगता है? नो सर। वो क्या है? सर वो भी भाषा ही है। वो भी भाषा है। सो इंग्लिश से डर क्यों लग रहा है? प्रैक्टिस नहीं किया है कभी। प्रैक्टिस नहीं किया है कभी। नहीं किए तो डर किस बात की? भाषा ही तो है। यस सर। भाषा ही है तो है। हमने कहा एक बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, पैदा होने के बाद वो कुछ जानता है कैसे बोलना है? नहीं जानता है, ठीक है। वो कई बार गलत बोलता है, सारे बच्चे गलत बोलते हैं। यस। क्या बच्चे को पता होता है मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं पता होता है ना। बच्चे को पता होता है मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं पता होता। अगर बच्चे को आप जाइए और बता दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, बच्चा नहीं बोल पाएगा। मैं गारंटी लेता हूं बच्चा कभी भी नहीं बोल पाएगा। अगर बच्चे को पता चल जाए कि मैं इस चीज को गलत बोला हूं, मैं इस वर्ड को जो बोल रहा हूं गलत है, he cannot speak or she cannot speak। बात समझ रहे हैं? तो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके अंदर इंग्लिश बहुत है। मैंने कहा अपना व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सिद्धार्थ। इतना बढ़िया सेंटेंस बोल रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लखनऊ। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम वेयर? लखनऊ यूनिवर्सिटी। फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। इंग्लिश बोल तो रहे हैं। अब बताइए, आपने जो सेंटेंस बोला, जितने भी सेंटेंस आपने बोले, जैसे आपने 4 सेंटेंस बोला, ठीक, मैं मानता हूं ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश तो है, एक भाषा तो है। अब आपने इसको जो है नॉर्मली बता दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता था मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूं दैट इज ए करेक्ट। बात समझ रहे? ये सही है, इस वजह से आपने बोल दिया। अगर आपको पता होता कि नहीं ये जो मैं बोल रहा हूं पता नहीं सही है कि नहीं, यू कैन नॉट स्पीक, नहीं बोल पाते आप। बात समझ रहे? आपने देखा कि जो सेंटेंस मैंने 4 बोला, माय नेम इज सिद्धार्थ, आई एम फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन, आपको पता है ये सेंटेंस सही है, तो आपने सबके सामने बोल दिया, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है? ठीक है, मैंने कहा आपको इंग्लिश नहीं आती है, मैं मान रहा हूं बिल्कुल नहीं आती। अभी आपने आपका अभी एकदम बिगिनर है, एकदम बेसिक है। मुझे लगता है अभी बहुत दिन भी नहीं हुआ, कितना दिन, 2-4-10 दिन जो भी हुआ, ठीक है, इतना ही दिन हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलिए ठीक है, आपने कुछ नहीं सीखा, लेकिन आप एक भाषा के लिए आए हैं, एक लैंग्वेज के लिए आए हैं। आपको करना क्या है? बोलना है। गलत करना, गलती करनी है। बात समझ रहे हैं? गलती करनी है। क्या करनी है? गलती करनी है। आपको हिंदी आ रही है, ठीक है, हिंदी आती है कि नहीं आती? आ रही हिंदी लैंग्वेज जानते हैं। आपको उसको टूटा फूटा ट्राई करना है इंग्लिश में। क्या करना है? टूटा फूटा इंग्लिश में ट्राई करना। मान लीजिए सेंटेंस नहीं बन रहे हैं, उसके वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंग्लिश में उसका वर्ड आ रहा है? अगर आ रहा है तो उसको रख देना, अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक जगह हिंदी रखिए, एक बार इंग्लिश रखिए, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, लेकिन बोलना शुरू तो करिए। बस में अगर एक बच्चा गिरेगा तभी उठना जानेगा, अगर वो गिरेगा नहीं तो उठना नहीं जानेगा। बात समझ रहे? आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लें, अगर आप जो है कहीं किसी सेंटेंस में फंसेंगे नहीं तो उसको जानेंगे ही नहीं। समझ रहे? तो पहले गिरिए, ठीक है। और गलतियां, टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। आप लोगों ने सुना है एक फ्रेज होता है, एक इडियम होता है, क्या होता है? टू एयर इज ह्यूमन। क्या? टू एयर इज ह्यूमन क्या होता है? इस इंसान ही से तो गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का ही तो पुतला है। बात समझ रहे? जो मानव है, मानव गलती ही है, गलतियों का पुतला है। बात समझ रहे? गलती करिए तो देखिए कितना मजा आता है गलती करने में। बात समझ रहे? गलती करेंगे, हो सकता है 2-4 लोग हंसे भी, अरे वही तो मजा आएगा, कम से कम आपकी वजह से लोग हंसेंगे तो किसके पास वो स्किल है कि ऑडियंस को हंसा सके? किसके पास वो स्किल है? बात समझ रहे? करना क्या है? बिल्कुल बेहिचक, बिना डरे हुए, ठीक है, इनको भूल जाइए, बस सोचिए कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, ठीक है। स्टार जो भी आपको आता है, ठीक है। एक टॉपिक दी गई थी आपको, व्हाट इज लव? ट्रू लव। ट्रू लव। There is 2 words, the love and true love. Is there any difference between love and true love? Yes. Sir, we cares. Do you love?
Yeah. No. अरे you don't love? अरे you love your father and your mother or not? Yes, sir. Excuse me. Actually, the main problem is that people think that when the word come love, they think relationship. They think only relationship. That is the main problem. A relationship with girls and boys. That is the main problem. Love means not this word is not only for the girlfriend and boyfriends Yes. and for wife. It is not only for. It can be for Family. family members. It can be for your friends. It can be for your parents. Yes. बात समझ रहे हैं? Brother and sister. Brother and sister. I asked, do you love? You said no. Yes. अरे yeah, I love my father. I love my mother. Yes. I love my family member. That is the true love. वही तो true love है. Yes, sir. बात समझ रहे हैं? वही तो true love है. Yes, sir. प्रत्युष आर यू ओके? हाँ, तो हमने कहा वही दैट इज है ट्रू लव. वही तो ट्रू लव है. Yes, sir. ठीक है. उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि आजकल के जो लोग हैं पीपल दे थिंक दैट लव मींस ओनली like fall in love with someone, that is a love. Yes. That is not a love. Yes, sir. And they go and search, they say that they search love. Yes, sir. Actually they don't know कि This is attraction. this is attraction. Definitely you know English very well, really you know. यार describe, एक कॉन्फिडेंस के साथ आइए, हाथ को छोड़िए, आगे रखिए, शुरू करिए. चलिए. Good afternoon ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Siddharth. My name is Siddharth. I am from Lucknow. I am from Lucknow. Today थोड़ा सा today I am here. I am here. I know I know I'm not able to speak in front of you all, I am not able to speak Speak. in front of you all. but But I promise you I promise you, one day one day I will be speaking. I will be speaking. Swear by God. Swear by God. जानते हैं इसका मतलब? भगवान की कसम भगवान खा की रहे हैं. हाँ. Swear by God. Swear by God. I will be speaking. I will be speaking. I will be showing. I will be showing. I will be speaking. I will be speaking. I will prove myself. I will prove myself. Yes, I can speak. Yes, I can speak. And I will be speaking in front of you all. I will be speaking in front of you all. हाँ, फिर से शुरू करिए और आप टॉपिक पे बोलना शुरू करिए. यस, इंट्रोडक्शन सिर्फ दीजिए. Hello guys, my name is Siddharth and I am from Lucknow. वेरी नाइस. और थोड़ा आवाज को बढ़ाइए, यहाँ से बोलिए. हेलो गाइस. Hello guys, my हाँ. name is Siddharth and I am from Lucknow. यस. And today आई एम हियर टू टॉक अबाउट I am here to talk about लव. love. हाँ, टूटा फूटा जो भी दिमाग में आप रखिए, बस सब सही है. जो भी हिंदी आ रही कहीं हिंदी रख दीजिए. ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना ही नहीं. यस. Love is the main powerful and strong feeling, care and kindness. वेरी नाइस. यस. इतना बढ़िया अरे मुझे नहीं वो सेंटेंस याद था. सर और नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा. आप हिंदी जानते हैं? हिंदी बोलिए. चलिए हिंदी में बोलिए, आपको स्पीच हिंदी में देनी. सर क्या दें स्पीच हिंदी में? यस. सब नहीं आ रहा है. क्या है? सब किसी और से बोलना है पहले. अरे नहीं, आप ही को बोलना है. हिंदी बोलिए. सर क्या बोलना है? तो हिंदी लव पे बोलना है. सर लव पे क्या बोले हैं? सब बोल तो लिया हमने. सब बोल दिया. सब बोले तो अभी इंग्लिश में. चलिए अभी वहां पे आपको फिर आना है. ठीक है, लोगों को सुनना, ध्यान से सुनिए. ठीक है, उन्हीं के वर्ड्स को चुरा लीजिएगा. उन्हीं के शब्दों को क्या करना है? चुरा लेना है. ठीक है, उन्हीं के शब्दों को चुरा लीजिएगा और 2-4-10 लाइन आके बोलना पड़ेगा. ठीक है, ओके, सिट डाउन प्लीज. यस, आर यू ओके? यस. हाँ. Yes, Mr. Pratyush, do you love with anyone? Yes, sir. I am love with my family and my. It's not called family. It's called my heart. It's called my backbone. Very It's nice. called my organ, and it's called my part of body. It's called which each and everything for me. So I love my family and my, including my cousins, including my nephew, including my each and everything. Very nice. Including my things like my bike, my laptop, and my etc. things. Very So, nice. May Start. I go ahead? Yeah, definitely. Go ahead. सीधा एकदम सीधा खड़े होइए. हाँ. कैंसर क्या हो ना, अचानक पूरा पेट सीना सब पूरा दर्द होने लगा. बैठे बैठे नॉर्मल हो गया. बहुत दर्द हो रहा था. नॉर्मल है ना? हाँ, normal. अगर खड़े होके बोल सकते हैं तो नहीं, सर, खड़े हो जाएंगे. ठीक, कोई बात.
Uh, Good afternoon, everyone. I am so exciting and I'm so excited. I am so excited and happy to see you here because it's my second class, no, sir? Second It's public my speaking. second public speaking class, so I am very happy to see new face. What's your name, ma'am? What's your name? Niharika. It's a wonderful name. What is the meaning about Niharika? Oh my God. What's your name, ma'am? Richa. Are you Siddhartha? I'm right? Yes. Actually, in second class, I In was first class. in first class. I was I wear CO. Ah. What's you are a fighting boy, right? Technician, bro. How are you? Same here. Yeah, not a bell, but a little bit bell. He's okay because you all are okay. You are okay. Na? So you're giving me a potential and Precious power. time. Yeah, definitely. Power. Suppose that one body is ill and all body is so good. So कहते नहीं एक आलू पूरे आलू गंदा कर देती है. एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. So I am going ahead. Good afternoon, everyone. First of all, I introduce myself because it's my second class and everybody is know me who I am. So I am going with my older journey. So tell you about myself. My name is Pratyush and I am belong Lucknow. I belong to. I belong to Lucknow. From class, I belong from. I belong to. I belong to Lucknow. I am nahi. I belong to. I belong to Lucknow, and I did my graduation from KKC College, and then after I then after I go my dream job, and after a few years, I I resigned from my favorite job. What was the job? It's a paraforce. Oh. So then after I completed my IHM and I am passed out from IHM Lucknow Institute of Hotel Management, and there was that time I was a good chef and I am a chef winner during my college time. Oh my God. So we are expecting something. But sir, commercial kitchen and home kitchen is different. Yeah, definitely. Props home kitchen in within not more than 4 feet, but commercial kitchen into props huge, High space. high spaces. So it's a good and they are very excellent kitchen, and you have each and everything to make your food. So whenever we wear a dress, it's called a build. Yes, I am a chef, and put a nice beer, one pan and one spoon and one fork is the side of holder. Oh. So it's called a. So it extra gives lots power. of motivation. Yes, a motivation. It's called motivation, not a Not a extra job. thing. Not a job. It's called motivation. And sir, chef job is not a easy job because entire people and entire guest dependent on your food. So whenever you make a food, so then you feel it's my magic hand that I am able to make food for my colleague and for my guests. So that time I was feel happy. I think you don't understand what I am saying, right? Very nice. बहुत अच्छा. यही तो skill है public speaking. Yes. I think you don't know what I am saying. Ask question. वही question कर लीजिए. What did I say? What did I say? How do you think about IHM? As you said that this is Institute of Hotel Management. So that time what I was. What I was that time. आप क्या थे? हाँ. You are chef. That time I was a winner or not? I was a winner. During my college time, I was a chef winner. And Lucknow Taj, executive chef Narendra Singh, and give me a coat, chef coat, and say, Pratyush, it's your, you have right to wear it. Right. During my 25 years journey, you will become one day executive chef. Executive chef is a father of hotel. Entire chef is a father of entire chef. So I am going ahead. Then after I completed my IHM, and after completing my IHM, I wear
I work go to Bangalore for my internship, and after internship, I was coming Lucknow because my uh, as well as I was to tell you that my mom's health is not good, so I was come back in Lucknow, and I came back. I came back in Lucknow. Hmm. In this time, I'm in a MNC multinational company, in a assistant, working as assistant manager. But in this time, I am under the leave. But my job is secure because I am attached with my senior and the HR office. Hmm. So my HR team and my senior was sorry, he's telling that Pratyush, don't worry about your job. Your job is secure because you are not good and not able to do your duty. And if you want more 4 and 5 months extra leave, so you should take this. That is a paid leave. No, sir, it's unpaid leave. Unpaid leave. Unpaid leave because it's not a MNC company. it's a MNC company Mhm. and it's not a accident. It's a volunteer. Hmm. Suppose that I was fell down and my leg is totally cracked, so company give you something because it's an accident. But you volunteer, no sir. So how Right. can company give you a stipend and Definitely. 50% or basic salary or SIT? So I am going ahead because time is money. Because time is money. So today topic is love or true love. I think true love. So, What's your name? Mohammed? Umair. Uman. Umair. U Umair. Umair, right? I am right. Oh, please don't take it personal or serious. My tongue is not able to speak any word. So that's why you are here, na? You know, so I am here. That's why you are here. So I am here. So, Med bro, I am going ahead and Niharika ma'am, please give me your full attention because I need attention. If you will give me attention, I speak more and more. Definitely. Uh,